children, today let's start with chapter number 8, data processing. In this chapter, I will tell you about data information, storing data, reporting information, and decode. So let's start with the chapter now. We have learned about how to apply the concept through visualization in the previous class. Now we are here going to learn about the interrupt, how to interrupt data and process. This is called data processing. So we can say data information. Data refers to raw input, and when this data is processed, the output receive info. Look at the table of the students with their ages given below. Right? Here you have name Ria Rajze. The data mentioned before it is presented in tabular form. It gives the information of in a neat manner, and it become easier to read the data in this form. So sorting data, arranging the data in a specific order. जब आप डाटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हो, it is called sorting of data. It is easier to locate data when it is only. Let's count the similar object and write in the table. आपको similar objects को count करना, उनको टेबल में राइट लाइक दिस. बास्केटबॉल कितनी है? 8. क्रिकेट बॉल 7, टेनिस रैकेट 5, टेबल टेनिस रैकेट 3, क्रिकेट बैट 6 and chess board is 4. Now these are the name of the items and the और आपको शॉर्ट आउट करना है उसमें से. नाउ यहाँ पे आपको क्लास एक्टिविटी दी है दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन. अब आपको किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है. लाइक टेबल्स कैन बी यूज टू, आप टेबल्स का यूज कर सकते हो, पिक्चर्स का यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट एनीथिंग. मैप्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. इट हैज टू फाइंड द रूट्स. And you can also use pictograph. Pictograph, it can be used to represent information like your washroom. Now what is decoding? ठीक है, अब डिकोडिंग क्या होता है मैं आपको बताता. द प्रोसेस जिसमें आप कोडेड मैसेज को कन्वर्ट करते हो किसमें, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, इसको हम डिकोडिंग कहते हैं. लाइक मिस्टर वियर टेल्स अबाउट द सीक्रेट मैसेज ऑफ मार्शल. A1, B2, C3, B4, E5, ये अल्फाबेटिक और नंबर, इनको नंबर फॉर्म में ऑर्डर कर. तो you are naughty. तो you, y is 25. So we will write 25. 25, 15, 21. You are naughty. 1, 8, 15. These are the way we decode that. Here you have given the activity. एक होता है आपका necessary. इसका मतलब क्या होता है? The process of coding or decode a coded message. Right? अब देखो यहाँ पे दिया आपको 8, 5. ठीक है, तो आपका 8 पे H, 5 is right, E, 85, 12, 12, 12. तो 12, 12 पे आपका क्या जाएगा? LL, E, L, L, and 15 is O, तो hell. Like this you have to write these coded, right? This is all. Some factors given, symbol can be also used to represent information. आप symbols का भी use कर सकते हो information को represent कर. The first world map in 16th century was used by Greek academic, that is Anaximander, right? This is all in the chapter. Hope you understood each and everything. Now we'll meet in next class. Thank you.